We have Lavanya at 4, Siddhant and Anamika at 3, and Aman at 1, which means Lavanya, you are our next challenger on You versus YouTube. Congratulations. Thank you. Okay, we've got 10 questions for you divided into the silver tier, gold tier, diamond tier. So let's just start you off by introducing you to the silver tier. These are the 5 creators you're going to meet up first. We've got Arun, the giant killer, with environment. We've got Gaurav Garg with GK, Ganesh Pai with mathematics, Technical Guruji with technology, and Reena D'Souza with sport. So those are the 5 that you have. You, of course, will decide the order of the questions coming at you. तो बैटिंग ऑर्डर जो है वो आप डिसाइड करेंगी. तो आप 1 मिनट ले लीजिए और वो डिसाइड करके मुझे बताइए. So while Lavanya decides the order, आपको मैं बता दूं कि आप भी ये गेम उनके साथ खेल सकते हैं. How? जैसे ही क्रिएटर सवाल पूछने आएंगे, आपकी लाइव चैट विंडो में एक पोल कार्ड आ जाएगा with the question and 4 options for the answer. Only one option is correct. All you have to do is select your answer on this poll card. And of course, correct answers all help towards the COVID relief effort in India. So you're doing this not just for yourself, not to just brag to your friends, but you're also doing it for community and country. Right now, it is time for Lavanya to open her eyes. तो बताइए कौन आएगा सबसे पहले? ओह, इतनी स्ट्रेटेजी, इतनी सोच. I'm not very good at any of these. So, okay, I'll take maths. No, I'll take maths first. Certainly, no, मैं करूँगी. All right. Once again, Shri Ganesh with Ganesh. You must be so happy, huh? The first question is mathematics. Amazing. Absolutely. I'm excited to ask her the question. Well, she is excited to answer the question. I'm sure she's got 1,000 rupees, which she brings from ground zero. Yani ke pehla sawal is worth 2,000 rupees. Ganesh, over to you. So Lavanya, like I'm assuming, were you good at math in school? Did you enjoy math? I was good at math in school, but I'm not good at it now anymore. Asha, then I think I will not blame you. I will blame your teacher. I think you just needed better teachers. No, I had amazing teachers. Oh, aise Ganesh, aise, you're throwing her under the bus right in the beginning. Yes. So Lavanya, आपको शायद मैथ्स नहीं पसंद, लेकिन क्रिकेट देखते हो आप? क्रिकेट पसंद है आपको? No. अच्छा, क्रिकेट भी नहीं पसंद? I used to watch it with my dad as a kid, but then I don't watch it anymore. But yeah, sure. अच्छा. Go ahead. So मैथ्स और क्रिकेट दोनों बचपन में ही था एंड अभी दोनों से संबंध नहीं है आपका. Yes. All right. लेकिन आपने सचिन और विराट और MS धोनी के सेंचुरीज के बारे में सुना तो होगा, या शायद कुछ सेंचुरीज देखे तो होंगे. जी. So उसी से रिलेटेड मेरा पहला सवाल है ये. How many months are there in a century? Option A, 120. Option B, 1,200. Option C is 12. And option D is 12,000. Okay, so a century is 100 years. So by 12. So that would be 1200. So B, is that the one that you want us to select for you? Yes, let me recheck because it's maths, please. इतना खौफ, 100 and... इतनी दहशत. हाँ, ठीक है. Okay, तो आपने कहा B 1200, तो आइए उसको select करते हैं आपके लिए. Ganesh, she did the math. She should be a little more confident. Lavanya, I think you still enjoy math and I think you're good at it. And congratulations, this answer is absolutely correct. Well done. Thank you. 1,200 months is the right answer, and you took about that much time to give the reply to that because that's how scared you are of mathematics, but that is okay. We will move swiftly to question number 2. This is worth 4,000 rupees. बताइए किसको select करेंगे? I'll go with tech. Tech. All right. Technical Guruji will be asking you this tech question for 4,000 rupees. Lavanya, ऐसा क्या है टेक में कि पसंद नहीं है आपको? I mean, you don't like tech. You just said you are not good at it. No.
I'm a Luddite, okay? So I know I don't come across very well. Maths bhi nahi aata, sports bhi nahi aata, Luddite bhi hai. But yes, so I'm not very good at keeping up with the news, tech things. Just that. बट टेक के साथ में एक्चुअली एक अच्छी बात ये है ना, आई मीन कि बिकॉज वी यूज इट ऑन अ डेली बेसिस, हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सारे गैजेट्स हैं, तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट हम कुछ कुछ अपने आप सीखते रहते हैं और आई थिंक हमारा नॉलेज अपने आप बढ़ जाता है. तो आई थिंक कि शायद ये सवाल का जवाब अगर आप थोड़ा सोच के दोगे तो आप दे पाओगे, बिकॉज यू नो आई मीन एक चीज जो बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, आपने भी बहुत नोटिस किया होगा, हम सब मोबाइल फोन्स गैजेट्स यूज करते हैं और उसमें स्टोरेज का इशू बहुत ज्यादा होता है. मतलब कभी हमको लगता है कि यार स्टोरेज एकदम अनलिमिटेड हो जाए, हम जितना मर्जी फोटो स्टोर कर ले, जितना मर्जी हम उसमें हम वीडियोज वगैरह रिकॉर्ड कर ले, और यू नो मतलब हमारे गैजेट्स को एकदम बस अल्टीमेट स्टोरेज डिवाइसेस की तरह शायद हम यूज कर लें. तो उसी से मेरा सवाल है आपके लिए कि विच ऑफ दीज फाइल साइजेस इज द लार्जेस्ट, एंड योर ऑप्शंस आर 1 MB, 1 KB, 1 GB, और is it 1 TB? Okay, it's D1 TB. You're saying it's D1 TB, right? Yes. So should we select that for you? Yes, sure. 1 TB. गौरव बताइए, ये सही है कि गलत? आई विश कि अगले जो फोन में लवन्या के पास में स्टोरेज होगी वो 1 TB मिल जाए, बिकॉज दिस इज द करेक्ट आंसर. 1 TB इज द राइट आंसर. फैंटास्टिक. और इसके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन फॉर दोज ऑफ अस हु थिंक कि जो टीबी है वो एक बीमारी होती है, तो उनके लिए भी कुछ सारा इंफॉर्मेशन अगर आप दे दें तो. सबसे पहले हम बात करते हैं बाइट्स की. तो अप्रोक्सीमेटली हम मतलब होता है एग्जैक्ट 1024 है, बट यू कैन टेक इट 1000 एज एन इजियर वे. तो बेसिकली 1000 बाइट से बन गया 1 किलोबाइट, 1000 किलोबाइट से बन गया 1 मेगाबाइट, और 1000 मेगाबाइट से बन गया 1 गीगाबाइट. उसके बाद में 1000 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट, फिर 1000 टेराबाइट्स के बाद में आ गया एक्साबाइट, पेटाबाइट, ये चलता रहता है. और बेसिकली आज की डेट में हम सभी को जरूरत है बहुत सारी अच्छी अच्छी बाइट्स का, जो हम इस शो के थ्रू शायद निकाल पाएंगे. नॉलेज से भरी हुई बाइट्स. पर एक बात बताइए, आपके पास कितने मोबाइल फोन्स हैं? क्लोज टू अराउंड 700 to 800 आई थिंक. 700 to 800 मोबाइल फोन्स हैं आपके पास अकेले? या पर ये इट्स अ बिग कलेक्शन एक्चुअली. या पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी चार्जर्स हैव यू लॉस्ट? चार्जर्स मैंने कभी काउंट ही नहीं किया मेरे पास में कितने हैं, कोई कहाँ, मतलब बेसिकली आई एम दैट गाय जिसके पास में हमेशा सब कुछ रेडी आपको मिलेगा. मतलब इफ यू आर ऑन अ ट्रिप और समथिंग, तो मतलब आई एम दैट गो टू गाय कि आपको सारे कन्वर्टर्स, अडेप्टर्स, केबल्स, चार्जर्स, डोंगल वगैरह सब मिल जाएगा. और मुझे याद भी नहीं है कि कितने चार्जर्स हैं घर में. लगभग जहां हाथ डालूंगा वहां से एक तो निकल जाएगा. तो कितने हैं कितने खोए कोई हिसाब नहीं रखा उसका. Oh, that is fantastic. 700-800 phones. My God. Lavanya, I hope that you go all the way today and you can also buy 700-800 phones, right, to distribute to your friends around you. पर अभी दिल्ली दूर है. अभी तो आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन का ही आंसर दिया है. अभी आप तीसरी भी जा रही हैं, तो 8,000 rupees. Tell me, who do you have in mind for this question? Sports. Sports. Reena, over to you. Third question, 8,000 rupees. मैं हिसाब लगा रही थी कि शायद मेरा नंबर अब आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जितने भी कैटेगरी सिल्वर टियर में हैं, मुझे तो सब टफ लग रहे हैं. आपने ऐसे ही बोला था कि कुछ भी आसान सा नहीं है. लेकिन एक चीज बताना चाहती हूँ लावण्या, आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है और आप भी उतनी ही प्यारी हैं. बहुत पसंद आया जिस तरह से आप खेल रही हैं, तेजी से ऑप्शंस चूज कर रही हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सवाल जो है आपसे पूछने वाली हूँ उतना ही आसान शायद हो आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा सोचते हुए आपको जवाब देना होगा, क्योंकि ये माइंड गेम जैसा ही लगेगा. ऑलराइट, बैट और बॉल ये बोलो तो द फर्स्ट स्पोर्ट इन योर माइंड विल बी क्रिकेट. पर मेरा आपसे सवाल ये है कि विच ऑफ दीज गेम्स इज प्लेड विद अ बॉल एंड अ बैट? 4 options. Option A basketball, option B handball, option C baseball, option D netball. Confused between baseball and netball. I've never really even heard of netball.
I want to go with baseball, but I'm actually not sure what. मुझे पता नहीं netball क्या होता है या कैसे खेलते हैं, हाथों से खेलते हैं या फिर do you need a Can I get a clue on this? Are you sure you want to use a clue? Because you I'm have not 3 really assists. sure. Yeah. You have. Let me tell you that you have 3 assists available. वो हैं share a clue, ask player pool, and change the question. आपने इनमें से कौन सी गेम्स देखी हैं, खेली पता नहीं होंगी या नहीं, पर इनमें से कौन सी देखी हैं आप? बास्केटबॉल देखा है, बेसबॉल देखा है मूवीज में, एंड हैंडबॉल टू. तो एलिमिनेशन से आंसर कर लीजिए अगर श्योर नहीं है तो. Okay, I'll go with baseball. So C, baseball is what you say. Reena, tell us if that is correct or not. लावण्या, आपकी मुस्कान हमें बहुत ही प्यारी लगी है. सही जवाब है. यूं ही मुस्कुराते रहिएगा. बेसबॉल इज द राइट आंसर. कंग्रेचुलेशंस. आप बहुत बढ़िया खेल रही हैं एंड ऑल द बेस्ट. कीप प्लेइंग द सेम वे. Thank you for being so kind. Excellent, Lavanya. That means 3 questions answered, 8,000 rupees. Question number 4 is worth 16,000 rupees. और आप हमें बताएंगी कि ये सवाल आपसे कौन पूछेगा? GK. Okay, so Gaurav Garg, GG with GK. Gaurav, over to you. So Lavanya, अभी तक आप बहुत अच्छा खेल रही हैं. You have played really phenomenally, and we are playing for such a good cause. If it were on me, I would really give you a walkover, but I want you to win it. So Lavanya, do you like wildlife? Yeah, sure. So Lavanya, ferocious, powerful, king of the jungle, ये सारे attributes consider किए जाते हैं जब किसी भी चीज का नाम lion से inspired होता है. So मेरा सवाल आपसे ये है, which of these countries is named after a Sanskrit word for lion? And your options are A, Senegal, B, Singapore, C, Sri Lanka, या D, Mauritius. हाँ जी, I'll go with B, Singapore. B, Singapore. Very quick answer from Lavanya there. Seems very sure about it. So let us select B, Singapore. Lavanya, Singapore is the right answer. Very well done. Lavanya, सिंगापुर को द लायन सिटी कहा जाता है. यह ओरिजिनल मलय वर्ड सिंगापुर का एक एंग्लिसाइजेशन है. कहा जाता है इस मलय वर्ड का ओरिजिन रूट संस्कृत है, और 14th सेंचुरी में सुमात्रा के एक प्रिंस ने इस आइलैंड पर आने के बाद इसका नाम एक एनिमल के नाम पे रखा था जो उन्होंने देखा था, which was lion, and that is why it is called Singapore. And Lavanya, tell me, if you see a lion, can you identify it? Yes, I can, I guess. अगर आपके सामने एक लायन और एक टाइगर आ जाए तो आप पहचान पाएंगी कौन सा क्या है? हाँ जी. तो मैं एक एडवाइस देता हूँ, अगर एक लायन और एक टाइगर आपके सामने आ जाए तो पहचानने में बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, वहां से भाग जाना, वरना आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा. I did not see that coming. ठीक है, nice advice. Yeah. And trust me, you will not even see the lion and the tiger coming. So very quick. All right, but we see you coming towards the last question of the silver tier. Question number 5 for 32,000 rupees. क्या आप इसको क्लियर कर सकती हैं विदाउट यूजिंग एन असिस्ट? आपने अभी तक असिस्ट नहीं यूज किया. अगर आप सिल्वर टियर और गोल्ड टियर दोनों में असिस्ट ना यूज करें तो डायमंड टियर में एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज रिवॉर्ड है आपके लिए, बट थोड़ा सा टाइम है उसके लिए. राइट नाउ लेट्स जस्ट गो टू क्वेश्चन 5 फॉर 32,000 rupees. And we have Arun who will be asking you a question about the environment. Arun, I am noticing that you are being saved as the last question. Kabhi tier ka last question, kabhi game ka last question. Save the best for last, brother. Or probably the make or the break question, or the question that either propels you or the question that either expels you. So that's what environments become in this quiz now. So let us hope that this one can actually propel Lavanya to the gold tier. It's all up to you, my friend. Question 5 for 32,000 rupees.
Lavanya, good run you've been having, and we're going to continue this Hi. conversation on wildlife, lion, and more. And probably not a lion question. Any favorite animal that you have? I like penguins for some reason. Penguins, good. Penguins, koala. These, psychologically, a lot of people relate to these animals because they look so innocent and good to stare at. No, pets at home, Lavanya. I'm planning to adopt a dog. I'm just convincing my parents. Beautiful. My question to you is neither about a penguin nor about a dog, but it's about Okay. turtles. Yes, it's about turtles and how turtles are indicator species. Probably the only life that swims from the ocean comes to the mainland. Probably fish, whales, shark. You see, none of these can come to our beaches, but a turtle can. So my question to you is about sea turtles, and this is the question. Which is the world's largest nesting ground of olive ridley sea turtles? Option A, the Gahir Mata beach in Odisha. Option B is the coast of Mexico. Option C, the coast of Costa Rica. Or option D, the Redang Islands of Malaysia. Okay, so I think it's Odisha. Yes. Because a lot of turtles, I've seen this in documentaries. So that's what I'm inclined towards. I'll go with the Odisha. Excellent. You seem quite sure about this. Gahir Mata Beach, Odisha. Remember, if you get this right, you can win 32,000 rupees. So, over to Arun. Yeah, I'll go with A. Okay, so Gahir Mata Beach, Odisha is the one that we've chosen for you. Is that red or is that green, Arun? Just out of curiosity, Lavanya, which documentary? Just out of curiosity. Okay, Or was so it I random even video? just Yeah. these random videos. You see these videos of turtles nesting there, and then baby turtles going back to the sea. And I do know that Odisha is famous. The beach is famous. No, I didn't know the beach's name, but I did know that Odisha is famous for that. You know what this quiz helps us do? It just not makes us choose winners like you, but it also helps us spread awareness. By giving us a correct answer, you've put the turtle on the map, and thank you for that. Many congratulations. That is the correct Thank answer. There are very many different species of sea turtles. The olive ridley is one of them. And they get their name simply because of the olive green color that they hold. And Odisha in India is the largest mass nesting site for the olive ridley sea turtles. The other options such as Mexico, Costa Rica also have turtles, including the olive ridley. But Odisha, as we mentioned, is the largest nesting site of the sea turtles. Nice, and it is quite a fantastic site. I have also seen ये मैंने भी कुछ videos Yes. देखे हैं और अगर आप लोग जाके YouTube पे कुछ videos देखें, it is really a beautiful site. पर अभी मत जाइए, शो के बाद जाइएगा, क्योंकि अभी तो मामला जो है वो बहुत ही टेक्निकल होने वाला है, क्योंकि लावण्या ने जो है आधा जो ऑब्स्टिकल कोर्स है वो क्लियर कर लिया है और अभी आधा बाकी है. 5 down, 5 to go. You've cleared the silver tier. Congratulations, Lavanya. You have 32,000 rupees with you. That means your 5 questions that are left are divided into 2 tiers. The gold tier with 3 questions, usko clear kar dengi, to the last 2 questions are diamond tier. How are you feeling right now about this? I'm very excited. अभी तक तो ठीक ठाक था ना, थोड़ा difficulty level was okay. Yeah? Yes, it was okay. Yeah. You were very quick with your answers, and of course, you've got all 5 correct. Let's have a look at your colleagues who are in the player pool. Let's see how they are doing. Let's have a look at the leaderboard. We have Siddhant, Anamika, and Aman there. Siddhant has at 8, Anamika is on 7, and Aman is on 3. Of course, these are also carrying over from the time that Abhishek was playing earlier in the episode. But right now, it's all about Lavanya impressing all of us, and she has to impress 3 more people in the gold tier. आइए मिलते हैं आपके अगले टियर से. There you go. There's Nidhi with health, Sucharita with movies, and Roshni with science. These are the 3 that you have in front of you. You, of course, will decide the order of the questions
coming to you. पर लावण्या, आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आपने अपना असिस्ट सिल्वर टियर से कैरी फॉरवर्ड कर लिया है. ठीक है, तो मतलब 3 सवालों के लिए आपके पास 2 असिस्ट हैं. That means that it is time for you to go from 32,000 to 64, then 128, then 256. 3 सवाल आपके पास हैं. एक सवाल है साइंस का, एक है मूवीज का और एक है हेल्थ का. तो बताइए इनमें से कौन सा चूज करना चाहेंगी आप सबसे पहले? सबसे पहले मैं साइंस के साथ जाऊँ. तो साइंस के साथ जाएंगी आप. ये है आपका छठा सवाल 64,000 रुपए के लिए, जो आपसे पूछेंगी रोशनी मैम. So लावण्या, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं. इनफैक्ट योर आंसर्स हैव बीन सो क्विक. सो आई जस्ट होप कि Thank you. आगे भी आप इतना ही अच्छा खेलती रहें. सो यहाँ हम बात करेंगे आंसू की. अब आंसू हमेशा उदास होने पे नहीं आते हैं. कई बार जब हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तब भी खुशी के आंसू आ जाते हैं. जैसे कि अगर आज आप यहाँ पर 10 लाख रुपए जीत के जाएंगे तो शायद खुशी के आंसू आ जाएंगे. इसके अलावा एक और सिचुएशन होती है जब हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं, और वो है प्याज काटते वक्त, राइट? तो मेरा सवाल आपसे ये है, which acid plays a role in bringing out tears in our eyes while chopping onions? और आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए सल्फेनिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड एंड ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड. Okay, I don't think it's citric or nitric. It could be sulfonic or hypophosphoric acid. लावण्या, आपने कभी प्याज काटे? हाँ जी. आंसू आए? हाँ जी. Despite having glasses, बहुत आंसू आए. रणवीर, अगर प्याज काट के आंसू ना आने हो तो क्या करना चाहिए? मैं ना खुद ही ढूंढ रहा हूँ. इतने टाइम से खाना बना रहा हूँ. मेरा प्याज के साथ वही रिश्ता है. मतलब प्याज का प्यार जो है ना मेरा कंटिन्यूअस है. If you see in all my videos, I can't avoid crying. लोग मजाक उड़ाते हैं कि शेफ इतने सालों से खाना बना रहा है, प्याज में नाइफ डालता है और रोना शुरू कर देता है. मेरा बड़ा बुरा हाल है इस मामले में. मेरा डिपार्टमेंट बहुत वीक है ये लावण्या. मैं तो I can't help you, sorry. Okay, so let's bring you back to the game, Lavanya. This is your question 6 for 64,000 rupees. 4 ऑप्शन है आपके सामने: सल्फेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. इनमें से कौन से एसिड को आप चूज करना चाहेंगे? I'll go with an assist. आपके पास 2 असिस्ट हैं एक्चुअली इस टियर के लिए. सबके पास एक होते हैं. आपका बचा हुआ है सिल्वर से, तो वो इसमें कैरी ओवर हो गया है, तो आप 2 यूज कर सकती हैं. All your assists are available. Ask player pool, share a clue, change the question. तो कौन सा यूज करना चाहेंगी आप? अगर आप शेयर अ क्लू मांगे तो रोशनी मैम आपको एक क्लू देंगी, जिससे ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा. प्लेयर पूल में आप जान सकती हैं कि आपके जो 3 कॉलीग्स हैं वहां पे उन्होंने क्या जवाब दिया है. And change the question is self-explanatory. I think I'll go for a clue. You'll go for a clue. तो रोशनी मैम एक क्लू दीजिए इनको प्लीज. तो लावण्या, चलो आपके लिए बनाते हैं इसे आसान. तो इस एसिड में सल्फर होता है. Okay, thank you. I'll go with a sulfonic acid. ऑप्शन ए को चूज किया है इन्होंने क्लू सुनने के बाद. तो आइए उसको ग्रे करते हैं. और रोशनी मैम बताइए, इज दैट करेक्ट या आपने गुगली तो नहीं फेंक दी इधर? दिस इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. और क्लू सुनते ही लावण्या के चेहरे पे उसकी बिल्कुल वही वाली मस्त मुस्कान आ गई थी. एंड यू डिड इट रियली वेल. कांग्रेचुलेशंस एंड कीप गोइंग. रोशनी मैम, आपको पता है कोई साइंटिफिक अगर एक्सप्लेनेशन हो कि प्याज काटते हुए आंसू ना आए, उसके लिए कोई टिप या हैक या कुछ? एक्चुअली गौरव,
टिप या हैक तो मुझे कुछ खास पता नहीं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सजेस्ट करते हैं कि भाई इसे पानी से धो लो प्याज को, बट आई रियली डोंट फील दे वर्क। बट इसका रीजन मैं जरूर बता सकती हूँ कि जब हम प्याज को एक्चुअली काट रहे होते हैं तो उसमें से कुछ कंपाउंड्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लैक्रीमेटर कंपाउंड्स। इनफैक्ट ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये हमारे आंखों के आसपास रहने वाले नर्व्स को बहुत इरिटेट करते हैं। उन्हें हम लैक्रिमल ग्लैंड्स कहते हैं एक्चुअली, और उसी इरिटेशन से हमारे आंख से पानी आता है। सो बेसिकली इस दौरान जब ये हो रहा होता है तो इसके मतलब इसमें काफी सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं। जैसे कि जब हम प्याज को काट रहे होते हैं तो कुछ एमिनो एसिड्स निकलते हैं उसमें से, और उनके ऊपर जब एंजाइम्स काम करते हैं तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जो इस सल्फेनिक एसिड का एक फॉर्म होता है। सो दैट्स द रीजन, इस इरिटेशन की वजह से आंख से आंसू आते हैं। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सल्फेनिक एसिड से बात करनी पड़ेगी, राइट। मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं ना। वी कैन यूज अ चॉपर। आई मीन हाथ से मत काटो, मशीन काट देगी तो आंसू नहीं आएंगे। सही बात है, ब्लेंडर में डाल दो उसको। हेलमेट पहन लो यार। but Gaurav, to answer your question, the hack that works the most for me is to keep the roots on. जो पीछे के roots होते हैं उसको on रखो, don't chop the roots off, and chill them before. So you peel them, chill them, and then cut them. They are least disastrous or least harmful like that. एक्सीलेंट। तो ये वाला टिप जरूर यूज करिएगा। हेलमेट वाला टिप मत यूज करिएगा। बड़ा सा हेलमेट पहन के कर लिया तो लेडी फिंगर ना कट जाए, ठीक है? तो प्लीज वो मत करिएगा। ये चिल वाला ट्राई कर लीजिए। इट सीम्स लेस हैजर्डस, but right now, well, there seems to be no hazard at all for Lavanya because we keep throwing them to her and she keeps hitting them out of the park like a good baseball player. तो 6 सवालों के जवाब आप दे चुकी हैं। You have 64,000 rupees in the bag now. डबल कर सकती हैं आप। After answering question 7, you can get to 1,28,000 rupees. आपका अगला सवाल कौन पूछेगा आपसे? Will it be Sucharita with movies or will it be Nidhi with health? Movies. Movies. Let's go. But Sucharita, the good news is that Lavanya is a big fan of the movies, right? Lavanya, you're a big fan. Yes, I am. So if I had Fabulous. to ask you to choose your favorite film, like of all So time. that's a very, very tough question. But I just watched another round. It's this Danish movie. I loved it. It's brilliant. Yeah. It's so good. It's so good. That climactic dance sequence, Mads Mikkelsen. It's so good. Great choice. And I'm then- already impressed with you. It's horrible. They are making it into a Hollywood movie with Leonardo DiCaprio. I don't I think they heard need to about do that. Yeah. But listen, any excuse to see Leonardo DiCaprio dance, I will take it. I really sincerely hope that they make him dance in the climactic sequence. But great choice, Lavanya. That film Thank you. just won. That film just won an Oscar award as well, which just makes for the perfect segue because अभी मैं आपसे Oscars के बारे में ही बात करने वाली हूँ. Are you ready? Yes. Okay, wonderful. तो पहले ऑस्कर्स में बेस्ट पिक्चर अवार्ड के लिए सिर्फ 5 मूवीज नॉमिनेट होती थी, जिससे कि कई सारी डिजर्विंग मूवीज रह जाती थी, नॉमिनेशन में आ नहीं पाती थी। लेकिन अब इस बेस्ट पिक्चर कैटेगरी के लिए 10 मूवीज नॉमिनेट हो सकती हैं, व्हिच इज फैंटास्टिक बिकॉज़ इट इंक्लूड्स मोर फिल्म्स, व्हिच इज ग्रेट। तो मेरा क्वेश्चन लावण्य आपसे ये है दैट व्हिच मूवी इज द फर्स्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मूवी टू विन the Best Picture Academy Award? Okay, this question has 2 or 3 different things going in it, so read it very carefully. Your options are 4. A. Parasite. B. Roma. C. Crouching Tiger, Hidden Dragon. या फिर D. Gandhi. Okay. So. सवाल को ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो, सवाल को पूरा पढ़ो और फिर बताओ। Gandhi was in English. Roma was this Inarritu movie. I think it's Parasite. You said A, Parasite. Should we select that for you? Yes, please. Okay, काफी
sure लग रही हैं ये. Can Parasite take her to paradise, or will Parasite? क्या ये Parasite का खून चूस लेगा सुचारा? Come on, tell us. Have you watched the film, Lavanya? Yes, I have. Parasite? Thrice. और बाकी जो ऑप्शंस है वो सारी देखी आपने? रोमा, क्राउचिंग टाइगर, गांधी? I've not seen Crouching Tiger, Hidden Dragon. Okay. Well, when Crouching Tiger, Hidden Dragon came out, Ang Lee की फिल्म है वो, और वो बहुत बड़ी फिल्म थी. Gaurav will agree with this. Everybody all over the world was talking about this film. It was just such a big phenomenon. But you have gone with Parasite. Bong Joon-ho की ये film talks about the class divide and so many other things. It's one of the finest films to have come out recently, and it is the absolutely right answer. Parasite is the correct answer, and you move on to the next one. Yay! Thank you. That is fantastic, Lavanya. Tell me something. You also want to work in film, right? Is that correct? Yes, I do. It's a pipe dream, but yes, I do. But doing what? What do you want to do? Cinematography. Cool. Very impressive. Yeah. Very cool. Not a lot of female cinematographers in the film industry, the ones which are fantastic, and it's great that you want to join cinematography. Very impressed. Thank you. I hope that you become an ace cinematographer. पर अभी जो है ये फ्रेम जो हम बना रहे हैं उसमें सिर्फ एक सवाल बाकी है to clear the goal tier, right? एक सवाल बाकी है, एक असिस्ट भी आपके पास बाकी है. गोल टियर को क्लियर करने के लिए ये लास्ट सवाल है. You have one assist that can help you to jump into the diamond tier. But right now, standing between you and the diamond tier is Nidhi with a health question. This is question number 8, worth 2,56,000 rupees. So Lavanya, you've been playing exceptionally well. It's been a delight. आपको फट आंसर करते देख के तो मैं बहुत impressed भी हो रही हूँ. I'm actually enjoying it also a lot. So I hope health and nutrition and fitness is something that interests you. Does that? Yes, sort of. I try to keep up with it. So Lavanya, your question is around nutrition. Spirulina दुनिया के सबसे popular supplements में से एक है. It's loaded with nutrients and antioxidants, which has many benefits for your body and brain. And my question to you is, spirulina belongs to which of these categories? आपके options हैं A, herb, B, algae, C, fungi, or D, spice. Okay. I really don't have an answer for this, so I'll have to figure it out. थोड़ा guesswork करके, I guess. Guesswork is one way to go, Lavanya, but I want to give you some good news. आपके पास अभी एक assist बाकी है, तो आप choose कर सकती हैं from the 2 that are available. You can choose one that is left for this tier. You have ask player pool and change the question. तो आपके जो 3 colleagues हैं, सिद्धांत, अनामिका और अमन, उनका क्या आंसर है आप ये जान सकती हैं before making your decision. Or of course, you can just go for change the question and Nidhi will give you a new one. So I'm hearing of spirulina for the first time, so I really can't place it anywhere. Remember, if you get it right, you go to 2,56,000. If you get it wrong, you lose half your earned sum till now and you go to 64,000. और of course, आपके पास एक और ऑप्शन हर समय पे है कि आप गेम को छोड़ के जा सकती हैं और जितना पैसा आपके पास है तब तक उस सब को लेकर. Okay, I'll change the question. You will change the question. Okay, Nidhi, she has chosen to play the assist, which is change the question. So if you could ask it again, that will be question 8 for 2,56,000 rupees. But before you do that, अगर आपको guess करना होता लावण्या, I know the stakes are very high, तो आप करती नहीं guess question 8 पे. पर अगर guess करना होता, तो आप क्या choose करती? Herb. You would have chosen herb. I would have probably chosen algae.
Okay. I think that Arun is putting his hand up. He would have chosen fun guy because he's a fun guy. So Gaurav, you're absolutely right. It's a blue-green algae, or also a cyanobacteria, and it uses photosynthesis to convert nutrients, and it's one of the most nutritious supplement on earth. I didn't hear any of that after you said I gave the right answer. I did not hear any of that. I just now want to hear applause from all the YouTube creators, the domain experts. Please, good man. Come on, everybody. Come on, everybody. Come on, everybody. Come on. Acha, theek hai. Coming back to the game. This is question 8. Once again, the health question for Lavanya. Nidhi will ask it question number 8 for 2,56,000 rupees. All the best, Lavanya. आजकल टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गई है कि हम जागते भी उसके साथ हैं और सोते भी उसके साथ हैं. सो रात को सोने से पहले भी आप फोन चेक करते हैं और उठते ही सबसे पहली चीज जो आप करते हैं दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग. सो ये सब हमारी बॉडी के सिस्टम के साथ इंटरफेयर करता है और मेरा सवाल आपसे इससे ही जुड़ा हुआ है. सो माई क्वेश्चन टू यू इज व्हिच केमिकल इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अस फीलिंग स्लीपी. So, आपके ऑप्शंस हैं A, ग्लूटामेट, B, एड्रेनलिन, C, मेलेटोनिन और D, मेलानिन. I think it's C, melatonin. Because adrenaline is, it's not that. Melanin is, I think, what you have on your skin. It gives you the skin color. Glutamate, I don't know what it is, but it sounds like gluten. Melatonin. I think it's melatonin. Well, don't look at me. I don't know the answer. But you are saying C, melatonin. Is that the one that you are wanting to choose? Yes, I'll go with melatonin. Okay. C, melatonin. Will this put the game to sleep for you or will it wake it up to new possibilities? Nidhi will tell us. Lavanya, you were playing really well, and glutamate के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है what it is, and you heard something about melatonin that you gave that answer. Yes, out of the 4 options, that was the first one that struck me. फिर मैंने थोड़ा elimination किया, but I still don't know what glutamate is. Glutamate is actually an amino acid, and your correct answer was C, melatonin. Congratulations, you crossed this goal tier. Thank you. As she rightly said, melanin is, the color, the reason why we have the change in color of the skin. Melatonin एक हार्मोन है that is responsible for making us sleepy. Melatonin release जो होता है, इसकी interruption से आपको insomnia होता है और lack of sleep. हमारी जितने भी electronic devices हैं, from computers to phones, tablets, all of them release a blue light that has a short wavelength जो हमारी circadian rhythm को affect करता है और हमें नींद नहीं आती. And I'm sure Technical Guruji will second that. डेफिनेटली ये सब चीजें होती हैं और हम फेस भी करते हैं, इसीलिए आपको स्मार्ट बनना चाहिए और आपको ब्लू लाइट फिल्टर्स यूज करने चाहिए. अब वो चाहें तो आप ब्लू लाइट फिल्टर वाले ग्लासेस पहन लीजिए या फिर देयर आर सर्टेन एप्स मोबाइल फोन्स में या लैपटॉप्स में आप तो बिल्ट इन भी फीचर्स आते हैं जहां पे आप अगर ब्लू लाइट फिल्टर को इनेबल करते हैं स्पेशली शाम के टाइम, ताकि आपकी वो स्लीप साइकिल से बेसिकली इंटरप्ट करते हुए आपको ऐसा ना हो कि आप एक तो फोन इसलिए यूज करते हैं कि आपको नींद लगता है कि अब आ जाएगी, लेकिन वो यूज करने से आपको उल्टा नींद और आती भी नहीं है. तो बेटर इफ यू यूज अ ब्लू लाइट फिल्टर, तो वो इंटरप्ट नहीं करेंगे आपकी स्लीप के साथ. या फिर गौरव आप ये भी कर सकते हैं कि सोने से पहले आप अपना फोन दूसरे कमरे में रख दीजिए और फिर जाके सो जाइए. पर आप ये नहीं कर सकते क्योंकि जब तक आप अपने 700 फोन दूसरे कमरे में रखेंगे सुबह हो जाएगी. Well, thank you so much, Gaurav. Thank you so much, Nidhi, and congratulations to Lavanya. Now you just have the diamond tier left. 2 सवाल आपके बाकी रह चुके हैं और आप अभी चैलेंजर हैं, पर आपके जो कॉलीग्स हैं प्लेयर पूल में, वहां भी बड़ी अद्भुत चीजें हो रही हैं.
Anamika and Siddhant are both at 9. Well done, both of you. Aman, आप थोड़े पीछे रह गए हैं. Come on. Whoever is in the lead will get to be the next challenger when Lavanya is done with her next 2 questions. Diamond tier, we just have 2 questions left for you, but we will play that next time, Lavanya. So I hope that you generate some melatonin and get a good night's sleep. Yes? And then you come back feeling absolutely fresh and take on those last 2 questions and get to 10,24,000 rupees. क्योंकि ये पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं है. आप इस शो में जो भी कमाएंगी, we will match that amount and donate it to Give India, who is battling for the COVID relief effort in the country. So it is for a very, very good cause, one that is bigger than you. आप सब जो घर पे देख रहे हैं, I hope you all enjoyed playing along in this game and I hope you will do so in the next episode as well. तो भाई चलिए, खेल खत्म पैसा हसम. थैंक्स करना चाहूंगा मैं हमारे सब YouTube creators को. Thank you so much everybody. So we will meet Lavanya taking on the final 2 questions in the next episode. मैं हूं गौरव कपूर saying goodbye on You versus YouTube. Thanks for watching. Lavanya, आपको अंग्रेजी खाना पसंद है? हाँ, पसंद है. नहीं, सिर्फ खाना पसंद है कि खाने की नॉलेज भी रखती है कि क्या खा रही है? रणवीर, बिकॉज दोस आर 2 different questions, aren't they? बिल्कुल. और आई थिंक इस डायमंड टियर पे तो सिर्फ खाना पसंद होना शायद काफी नहीं है, लवन. Yeah, okay, you're making me nervous now, but ठीक है, देखते हैं क्या आता है. That was the idea. मुझे लग रहा है ये लड़की तो मुस्कुराई जा रही है, थोड़ा तो नर्वस करो इसको. सही बात है, रणवीर ने बढ़िया तड़का लगाया है यहाँ पे, बढ़िया तड़का लगाया है, बिल्कुल.